पता नहीं भाई बीच में ये कैसे बंद हो गई, नो आइडिया। तो मैं सॉल्व पूरा तो सॉल्व नहीं कर पाया, बट मतलब कुछ कुछ अभी भी है पेंडिंग चीज़ें, पूरा सॉल्व नहीं हुआ बट समझ गया कि मतलब ये तो मेरा आंसर ही है, तो आंसर रिटर्न कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ उसको। मैंने थोड़ा सा हिंट हिंट में पढ़ रहा था, तो सॉर्ट करने को बोल रहा है इसमें टाइम स्टैम्प, तो मैंने टाइम स्टैम्प के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है। तो सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके और एक ऑफलाइन लिस्ट क्रिएट करके, जो कि इनिशियली सब ज़ीरो है और जो ऑफलाइन लिस्ट टाइम पे वो ऑफलाइन लिस्ट में है। अभी करंट टाइम कितना हो रहा है, पर फिर मैं हर एक इवेंट पे चेक कर रहा हूँ कि उस टाइम पे जो मेरा मैं वो किस टाइप का इवेंट है, मैसेज इवेंट है या फिर मेरा मेरा ऑफलाइन इवेंट है। तो अगर और उस टाइम उसका उसका टाइम कितना है, तो उसका टाइम भी कितना है, तो वो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, उसका टाइम भी कितना है। उसके बाद अगर वो मैसेज टाइम है, तो मैसेज में भी फिर वो किस टाइप का है, क्योंकि मैसेज में भी तीन टाइप्स है हमारे पास, ऑल, हेयर एंड लिस्ट। तो अगर ऑल है तो उसको हम मतलब ऑल का मतलब होता है कि ऑल मतलब है कि मतलब मेंशन सारे यूज़र्स को मेंशन कर मेंशन हो गए, सारे सारे यूज़र मेंशन हो गए हैं, तो सब यूज़र को प्लस प्लस कर दो, मतलब हमारे जो हमारा जो मेंशंस वाला हमारा एरे है इसमें सबको प्लस वन कर दो, तो सब प्लस प्लस वन हो जाएंगे। मतलब या ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे यूज़र हो जाएंगे, ऑल यूज़र्स। एंड अगर वो हेयर है तो मतलब ओनली ऑफलाइन वाले को नहीं करना, ओनली ऑनलाइन वाले जो है, ओनली जो ऑनलाइन वाले हैं उनको करना है। तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ कि मेरे को पता है मेरे पास इतने यूज़र्स हैं, मतलब मेरे पास इतने यूज़र्स हैं, मतलब ऑल ऑनलाइन यूज़र्स ओनली इतने यूज़र्स हैं मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास ऑफलाइन की लिस्ट है। तो जो लोग ऑफलाइन होंगे और वो ऑनलाइन है भी, अभी ऑनलाइन है, तो वो पहले अगर वो पहले कभी ऑफलाइन हुए होंगे तो उनकी लिस्ट मतलब उनका जो अभी टाइम होगा वो कम होगा, क्योंकि वो पहले हो चुके पहले कभी ऑफलाइन थे, जो कि अब जाकर वो ऑनलाइन हो चुके हैं, या फिर इक्वल हो चुके हैं, कि मतलब जो पहले ऑफलाइन थे अब इस टाइम पे आके वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो उन यूज़र्स के लिए मैं प्लस 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 कर दूँगा, सिर्फ उन यूज़र्स के लिए। अदरवाइज़ अगर टाइम स्टैम्प बड़ा है मतलब ऑफ मेरा बड़ा है तो मैं नहीं करूँगा। तो ये हेयर वाला है। और फिर लिस्ट वाला सेक्शन है कि लिस्ट है मेरे पास, तो लिस्ट इज समथिंग लाइक दैट, ID 1, ID 10, ID 0, ID समथिंग। तो आई स्टार्ट विथ JS 2, मीन्स J012, आई स्टार्ट फ्रॉम 2, so I will taking this 2, so 2 minus 0 will give you 2, and at that time go to that user ID, so means 1 minus 0, basically 2 means 1, so 1 minus 0 matlab ones. So I will go to my one of user and increase the mention value, and then here what I will do, I just going 4 times up, because I don't want ID, I just need the number, I just the number of that thing. So now 0 will get me, so next time if I get, so now 0 I will add 0, I will go to 0 1 0 ID, 0 user, 0 number user, and increase it mention. Okay. And if it is offline, if it is offline, so if it is offline means, so I just have to increase, I just have to update my offline list and make that user offline. How can I do that? So whatever the time at that time, so T is the time of this of this current offline, because which I am getting from here, which I am getting from here. This is T of current if it is offline or online. Okay. So if it's online, so let me make it off. If it's offline, so T, I get that T value. So current will be my
this T also, current. So this is my current number, this is my current. So current is this, sorry. So current I will get from my here. So current, I will get the current value. Then what is the user ID? So I get the user ID from this one, ID, and from that ID in my offline list I am increasing the time T. So TM is like the current time. This is like current time. So I can use the TM of this time, current time. So TM and current time, I guess they are both same. So I can use TM or current time, like both are same. Or I can use the T, simple T also. Simply T also. T is like current time. So like that will also work. Okay. So and plus 60 and update there. So whenever someone try to update that user, if it is offline, then it will not update. Okay, it's good now, but I'm failing after like few after 138 test cases, and I have to check like at which point of time I'm failing. So for this one, I'm checking my offline 61. So at that 61, I'm failing. So this is the 61. Timing is 61 here. Here means all the online one update 0, 0, 1. So 1 means this one. So user ID, message here. Suppose message, and here in message here only the one which have less value increase. So 1, 0, 1 become my value 61. Current value is 2. So current time is 2. So it is a timing also. Current timing is 2. So current timing. I'm not updating current time here, but from all I'm updating now. So current time will be this one. Current time will be this one. Maybe there is some issue. Let's check this one also. Let's check. Let's check. Where is the issue? Yeah, I offline message. So whoever come first. So let's suppose we have a offline. Offline means, so we have 3 users. So offline means it get offline. Offline 1, 0, 1. So this one will offline. So current is 1, so it becomes 61. So 1 becomes 60, 0, 61, 0, 61. My 0 user, no, 0th user, 0th user, 61, 0th user, 0, 1, 2, 0 user, 1, offline. So this user at current time is 1, current time is 1, and this user goes offline, this user goes offline for 61 seconds. Okay, then I come to message part. So message time means all people which are currently uh, online. So time is 2. So of course my 1 is not update. So I will update only 1 and 2 because they are not updated. So they will update here means they're online. So I will update them because their value is still 0. Current time is 2. So 2 is greater than 0. So I will update. And then again in offline. Okay, in the offline. So this time we are first one offline, which is like 0 to second time pay, time 2. So current time is 2. So current time is 2 and 1. So 0, 1 again. So 1 means this one. So 6. So 2 plus 60 means 62. So 62 becomes 62. At 62 become this one. Then at 61
61 we called here, so all online will be update. So at 61 this will should not be update. Expectation is this 0 1, but in my case all are which are all online. So 2, this is 1 1, so I update to 2 1 1 to 2, and this one is also update 1, but this one is still this one is expected to 0. Why this one expected to 0 0 1 2? So it's like because of this one. If I do offline so this one is offline, so 61 0 61 offline, this one at 62 offline, 61 62 offline, then I call it here. So both are so 2. So at time 2, so at time 2 so at time 2 I'm calling here. So at this time this will update to 1, update to 1 because I offline this one and then offline this one. Both are offline. So 0 0 1 is offline, 0 1 is offline, so 61, and then 1 is offline 62, then I call it here, it means online, so they both are only 1, so this become only 1, only 1, then 61 at 61 at 61 this will update, so 1 is become 1, this become update, this will also update, this will update, so become 2, so 1 0 2. Okay, so means this will come first if both are equal, both are equal, both are equal. It's like both are equal, then return A 0 is return B 0 B 0 something. This is like so this is like M A B C D E F G H I M M N O. So M is greater, N is smaller, M N O smaller to greater, so greater to smaller. So let's see this one. This one. Now what happened? Now here. Hmm. A and B1 is equal, both are equal, then return A0 2 is B2. ये तो रॉन्ग ही है भाई। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा, सब कुछ ट्राई कर लिया।
ए बी 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 0 1 2 0 इक्वल भी हो सकता है कि 0 1 इक्वल क्या इक्वल होगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बस ट्राई ट्राई एंड एरर ट्राई ऐसे नहीं होता भाई ऐसा नहीं होता भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन की प्रायोरिटी ऑफलाइन सो ऑफलाइन यही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर तो यहाँ पर वो कह रहा है इस वाले पे तो मैं टाइम सॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर तो मैं टाइम टाइम सॉर्ट हो रहा है यहाँ पर 0 1 तो यहाँ पर ऑफलाइन is getting priority online message this else this indicate we should mention everyone in respect of online here only online user if it is contains some IDs we should mention them respect to online and here if some contains some IDs we should mention them in respect of online offline. Okay, we need to remove the IDs from the online user and update its timestamp in any sort variable. 5 is offline but just account. Offline and on. What a question. But I'm doing wrong here. So offline ठीक है ऑनलाइन ठीक है तो आई थिंक कोई लॉजिक में कोई इशू है यहाँ पर ID T0 132 आई थिंक कोई लास्ट अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर लास्ट अपडेट है जो नहीं हुआ है यहाँ पर तो लेट्स सी कौन सा अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर तो 20 18 15 10 5 तो 5 है मैसेज 5 मैसेज here means or online so it's 3 so 0 0 0 become 1 they become 1 they become 1 here means or online so currently or online and 10 then at 10 equals to 0 so 10 plus 10 plus 60 becomes 70 okay current time is 60 current time is 60 current time is not 60 current time is t so current time equal to t means 10 चल रहा है अभी then 15 message so only 111 was there ये 1 भी नहीं अपडेट हुआ भाई ओला 000 currently message 00 is currently 0 5 here message so offline current time मेरा current time तो सबका 0 होगा सब 0 0 0 current time मेरा 5 है
अपडेट नहीं हुआ क्या यहाँ पे? करंट एम्प्टी होना चाहिए, मैसेज वाले पे आया मैं तो करंट टाइम मेरा 5 है, करंट टाइम मेरा 5 है, करंट टाइम मेरा 5 है। और यहाँ पे क्या मेंशन आई वट एवर द 0 आई में आएंगे, 0 है, करंट टाइम 5 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0 था, 5 है तो मैं मेंशन आएगा प्लस प्लस कर दूंगा। आउटपुट इनिशियल कंडीशन क्यों नहीं चली है, हेयर कंडीशन क्यों नहीं चली फर्स्ट टाइम पे? इज देयर सम इशू? हेयर कंडीशन क्यों नहीं चली फर्स्ट टाइम पे? वैसे भी ये हिल जाएगा, जब बड़ी चीज़ आएगी तो हिल जाएगा ये। हेयर टाइम, हेयर इज इट इज I0 आई में तो currently 0, int current 0, current 0 तो current 5, I get a 5 value, I will get a 5 value, so this is a 5, so I will get a 5 value. int 5 is to I, int 0 5, so current value is 5, message current 5 and current message here, so it will go to here and current is my 5, so and everything is 0 initially, so thing is 0, so why it is not updating here? 0 3 1 0 3 1 should take to plus 1 1 also, why it is not updating? Plus equal to, यार इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, the same बात है, plus equal to 1, it's the same thing, I plus plus, the same thing. चैट जीपीटी से पूछो भाई, अब चैट जीपीटी से पूछो भाई। What's wrong here? What's wrong here? And output inputs, input 3 and 3 and this one 3 and events. Wrong sort of order. This is why comparing string, not even priority lexicographically, so you just comes first before offline, so your computer actually does this, but when must be proceed first, otherwise is it please going to fix. So if first 0 0 true, string to integer, fix string to integer, okay, मुझे अपना भी कर लेगा वो। 0 पहला मेरा ऑफलाइन है, A0 offline true, otherwise false, first true, to I string, okay. You may do not need to collect data at all, you only need t. Curd adds confusion and हाँ ये तो पता है मेरे को, logic is conceptually correct but fragile. Logic, this works only with sorting is correct, with sorting is wrong. User who goes offline at time t has still becomes confusion, so mention this parent wrong.
This assumes u0 assume fails for multiple digits like u10. Hardcore, हाँ ये तो पता था मेरे को कि safer option string mention stem 0 string ये तो चल पता था मेरे को. Sorting by starting time string true wrong but wrong fix true wrong correct behavior. Okay, string. So I fixed this part. Doing this wrong though equal first if 0 first but must be proceed first same times time, otherwise a user goes offline at time t is still count offline t this comes before, so offline is one of them. Message does not. Okay, I was doing this wrong conceptually. Mention list node, this assumes bug. Safer option is this. So updating list options like this one, updating part, this one fix. तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 8 को save unsave does not break your current, so string ss temp ss fs2 dot substring 01 1 id plus 1 कर दो plus substring temp string temp लास्ट वैल्यू को देखते एक बार. current t i0 8 calling stry when string to integer string pair is failing. If same times time goes first, this return false equal necessary missing late current t fix. This is what is the wrong here. So what is the wrong? A and B, taking A and B first time. So if they are not equal, return this. If A and B are not equal, and if A is this true, otherwise false. Okay, I did this, ठीक है this. So string t current, I don't need current here. So t no need of current. So remove the current part, no need of current. Yeah, no need of current. I got it. Then we don't need current here. So we don't need current here. If time message is 0, so like it's like if t is 0. So it's like if my t is 0, so my t here is 0. This one is my wrong messages was it. So t is 0, okay, no need to do this thing. So if all happening, then use the for loop, means everything start this thing. Else part is I0 number 0, okay, and we can use t here. So just do I plus plus. Yeah, you can do just plus plus, like both thing is like both equal, same thing. And list part is this and this, mention id plus plus. Okay, we did this, and here we don't need this thing current time, don't need.
So current is like this, and offline if t, this is offline. Offline t only at this part. T0 offline, it will mention store 0, T0 ID. But IT is not this, so TM. Don't have TM, I have T here. So main issue is this part. This part is the main issue. And time. Mention 0. T plus 60 little mentions, so I'm getting this message.